a teacher came to a class and she brought two apples with her. It was an apple B, an apple A. She threw one of those apple B on the floor, and while throwing the apple, she was being very careful so that the outer layer of the apple should not have any scar or it should not be damaged from anywhere. Then she picked up that apple and asked the students to say bad things about that apple. The student started off by saying, you look so ugly, you don't have a good color, you don't know your worth, you don't know the purpose why you're here, things like that. Then the teacher, she placed that apple B to a side and picked the apple A, asked the students to say good things about that apple. The class students started off by saying, you're so shiny, you're so pretty, you're so smooth, you have so many benefits, you are a good source of iron, and all these positive things about the apple. Then the teacher, what she did was, she sliced the apple from the middle, the apple A. It was all juicy, it was very fresh. When she sliced the apple B, she noticed and she asked the students to observe that was brown from inside. The one who received all the negative comments, although it was apparently very shiny and it was the same as apple A from the outer, but inside it was all scarred, it was all brown. Same happens with us. When we face bullying, the victim of the bullying is actually managing himself from outside, is actually trying to be very calm and composed from outside, but within himself, he is going through a lot, which we might not be able to see, but all those words and gestures, all those physical reactions that he faced throughout the day make him feel so scarred and wounded, brown from inside. And eventually it leads to a very depressed state. Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you. I'm Tahira Javaid. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been practicing in Rawalpindi in Islamabad for past 10 years now. This video is brought to you by Pehchan Clinic, which aims to provide mental health consultancies online and in clinic both. It also intends to provide mental health awareness and help destigmatize the concerns related to mental health by providing online resources and by holding focus group discussions and workshops. I'm also affiliated with Institute of Medical Rehabilitation and Integrated Health Services Children and Family Hospital Islamabad. This month, we would be talking about depression, bullying, and positive thinking. We would be linking all these three because in our practice, we have noticed that sometimes depression is caused by bullying and it can be coped up by enhancing and building up the habit of positive thinking. So, like and subscribe to our channel and click the notification bell to stay checked in with your mental health. Our social media handles would be linked in the description box below. So let's see what do we have for you in the current video. So this is not the depression that we generally say, the depression that if we are feeling low and we are like, oh, I'm so depressed, I'm so low. That's very normal to be like that. Generally, when we are around people, हम किसी भी वजह से किसी छोटे से सिचुएशन में कोई एक बात हो जाती है उसमें लो फील करते हैं, वो एक नॉर्मल डिप्रेसिव स्टेट होती है. But when we say it's depression, it's clinical depression, it is very different. Only the person who's going through it can tell you how difficult it is for them to manage themselves. For example, the person who's going through bullying throughout the day, अब उनके साथ क्या होता है, सम ऑफ यू जो रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, वो बहुत अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे. जब पूरा दिन हमें कोई ये बात कहता रहता है कि यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, तुमसे होगा ही नहीं, तुम तो इसी तरह के हो, और someone is commenting about the complexion or about the physical traits or is commenting about height or other things, capabilities, बहुत सारी ways में bullying हो रही होती है. It could be physical, it could be verbal, it could be psychological, it could be sexual. किसी भी way में अगर हमें पूरा दिन bully किया जा रहा होगा, at the end of the day,
एक टाइम कुछ दिन के बाद ऐसा आता है, क्योंकि बुलिंग एक दिन में तो होती नहीं है, बुलिंग इज़ एक्चुअली समथिंग जो बहुत दिन तक चलती है, हर हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा इस तरह के एपिसोड रिपीट हो रहे होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो विक्टिम है वो बिलीव करना शुरू कर देता है उन सब नेगेटिविटीज़ को, उन सब नेगेटिव थॉट्स को जो उसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली सेल्फ इस्टीम लो होती है, विच इज़ अ स्टेट विच इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है। फिर रात को जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उन्हीं सारे थॉट्स में जाना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू रेमिनेट अबाउट इट। उसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, इंसोमिया होता है विच इज़ लाइक अनदर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह वो आइसोलेट करना शुरू कर लेते हैं अपने आप को, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को विदड्रॉ कर रहे होते हैं सोशल सिचुएशन से, बिकॉज लाइक पीयर्स भी बुली कर सकते हैं, आपको वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपको फैमिलीज में हो सकती है, समटाइम पेरेंट्स और सिबलिंग्स की साइड से होती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द विक्टिम दे टेंड टू आइसोलेट देमसेल्फ, विदड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को और प्रेफर करते हैं कि वो सॉलिटरी एक्टिविटीज़ करें, ग्रुप्स में इन्वॉल्व ना हो, which is another sign and symptom of depression. इसी तरह उनकी फिजिकल हेल्थ डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है, उनका खाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कोई उनके फिजिक के बारे में बोल रहा है कि तुम मोटे हो या तुम पतले हो और तुम ऐसे हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हैं, उनका दिल नहीं चाहता, उसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, विच इज़ अगैन अनदर साइन ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इससे ऑपोजिट भी हो सकता है, समटाइम्स जब आप बहुत लो मूड में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन भी हो जाता है, विच अगैन कुड पॉसिबली अ साइन ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को बार बार सोच रहे हैं जो बुली आपको पूरा दिन कहते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप इरिटेबल भी होते हैं, क्योंकि अब आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा है, देयर आर ऑल नेगेटिव थॉट्स गोइंग इनसाइड योर माइंड। उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, यू फीलिंग इरिटेबल, साइन ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, उसके साथ साथ जो चीज़ आ रही होती है वो डिफरेंट मूड स्विंग्स होते हैं, क्राइंग स्पेल्स आ सकते हैं, बात करने को दिल नहीं चाह रहा होगा। सो आहिस्ता आहिस्ता ये लीड कर सकता है टूवर्ड्स सो मच नेगेटिविटी कि सुसाइडल आइडिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। और रिसर्चर्स दे एक्चुअली टेल अस कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें डिप्रेशन इतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ बुलिंग हो जाता है दैट इट लीड्स टू सुसाइड। अब अगर हम बात करें कि जो डिप्रेशन है वो बुलिंग से किस तरह से कॉज हो रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, बेसिकली रिसर्चर्स ने ये आइडेंटिफाई किया है कि एडोलेसेंट और चाइल्डहुड में टिल द एज ऑफ 20 अगर हम बात करें तो 50% एस्टिमेटेडली 50% ऑफ लोगों ने बुलिंग फेस की होती है, दे आर विक्टिम्स। इसी तरह ये बुलिंग लीड करती है टूवर्ड्स एडल्टहुड में आपके प्रॉब्लम्स। अगर लेट्स सपोज आपने चाइल्डहुड में बुलिंग फेस की है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसे कोप करते जाते हैं, एज द एप्पल वाज शाइनिंग फ्रॉम आउटसाइड, आप एडोलेसेंट एज में तो शाइन कर रहे होते हैं, बट इंटरनली वो आपको खा रहा होता है, वो इंटरनली नेगेटिव स्टेट आपको इतना प्रॉब्लम में लेकर आती है, इतना डिप्रेस फील करवाती है कि इवेंचुअली एडल्ट एज में जाकर आप बहुत सवेयर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगेन रिसर्चर्स ने ये बात प्रूव की है। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च जिसके फाइंडिंग्स मुझे बहुत मज़े के लगे थे एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, एंड दैट वाज रिसर्चर्स को एक चांस मिला इन विच दे कुड इवेल्युएट 2 ग्रुप्स, जिसमें एक वो थे जिनको बुलिंग हुई थी, विक्टिम्स थे, और एक नॉन विक्टिम्स थे बुली के, उनको कभी बुली फेस नहीं करनी पड़ी थी। अब वहाँ पर 8 to 29 ईयर्स तक उन्होंने इन जो पार्टिसिपेंट्स थे इनको ऑब्जर्व किया था, इसमें इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की थी। इनकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली 20% ज़्यादा डिप्रेशन या रिस्क ऑफ डिप्रेशन और साइकेट्रिक इलनेसेस था उन लोगों में जो विक्टिम्स ऑफ बुली थे। 23% उन लोगों में था जो बुली खुद थे, क्योंकि हमें ये लगता है कि बुली जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट हियर वी नीड टू हैव अ लुक एट कि बुलीज को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हो रहे होते हैं ये सब करके, इवेंचुअली उन्हें भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं। सो दिस रिसर्च एक्चुअली शोड कि 23% people were at risk of depression or having other psychiatric illnesses जो bullies थे, और 31% वो लोग थे at risk of depression
जो बुली भी थे और विक्टिम ऑफ बुलिंग भी थे, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि बुलीज कौन बनते हैं, वो लोग जिन्होंने खुद भी बुली फेस किया हुआ होता है, उनके वो विक्टिम्स होते हैं, तो वो इवेंचुअली उस चीज़ को वो कंपनसेट करने के लिए खुद भी बुलीज बन जाते हैं. सो उस केस में 31% वर दोज जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर थे. अब यहाँ से हमें एक्चुअली ये बात पता चलती है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस बन जाता है बुलिंग की वजह से, जो कि जनरली हमें पता नहीं होता. ऑल्दो देयर आर अदर साइंस लाइक depression can be caused by other traumas, can be caused by death of someone, loss of something, financial reasons की वजह से हो सकता है, genetic factors की वजह से हो सकता है, there could be multiple factors. लेकिन उनमें एक बहुत important factor is bullying. इसको further we would be discussing and exploring about कि bullying कैसे होती है, कौन लोग bullies होते हैं, किस तरह से हम उसे overcome कर सकते हैं in the coming videos. But here we wanted to establish कि डिप्रेशन किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है. देखिए, अब अभी हमने साइंस एंड सिम्टम्स की बात की. अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है तो अब अफेक्ट क्या होगा हमारी लाइफ पे. जब नींद ख़राब होगी तो हम फटीग फील करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे, हमारी वर्क एफिशिएंसी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, हमारे सोशल रिलेशन, अब सोशल आइसोलेशन एंड विड्रॉल से सोशल रिलेशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे. लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा वर्क, एकेडमिक्स, ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही होंगी. अगर हम इरिटेबल हैं, हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हमारे क्राइम स्पेल्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी. तो ओवरऑल बुलिंग की वजह से जो डिप्रेशन कॉज हो रहा है, वो डिप्रेशन हमारे बहुत सारे एकेडमिक, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के एरियाज को हैम्पर कर रहा होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें इसे ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बुलिंग की वजह से डिप्रेशन जो आ रहा है वो एक लीडिंग फैक्टर है, और उसको हमें कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमें मेजर्स लेने हैं. That's all for today. If you enjoyed the video, give us a thumbs up. For more information, follow us on our social media. To book an appointment, give us a call. And I would catch you in the future videos. Thank you. Allah Hafiz.